Assalamu alaikum, my dear students. A very warm welcome to this class of chemistry. Today we are going to take up the first topic of your course, some basic concepts of chemistry. ये जो topic है, this chapter carries 5 marks in your board exam, and from the perspective of NEET and JEE, it's very important. From last few years, you can see every year one question is at least asked from this topic. Number 1. Number 2, ये जो हमारा topic है, the concept that fall in this topic get repeated directly or indirectly in every other chapter of the chemistry. So you can say it's like the foundation stone of your chemistry course. Very important. So it becomes imperative for you to master all the concepts that fall in this chapter. Coming directly to the topic, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? What we will take up today? Number 1, chemistry का introduction, and number 2, importance of chemistry. तो chemistry जानने से पहले मैं आपको बता दूं, from your lower courses you know that science क्या चीज़ है? Science is the study of natural phenomena, जिनको हम observations और experimentation से हासिल करते हैं. Natural phenomena ऐसे सारे processes जो कुदरती तौर पे होते हैं. तो अभी जो natural process है, there is a vast number of natural process. कोई एक natural process तो नहीं है. As you know, there are a vast number of natural phenomena. Stars, twinkling of stars, digestion of food, flowering in plants, rotation of earth, vast number, countless number of phenomena you can see. अब ये जो है, it's not possible for a person to study all these phenomena. इसलिए क्या किया गया? All these natural phenomena have their study have been divided into different branches of science. जैसे physics है, इसी तरह chemistry है, or you can say biology है, all that biochemistry, etc. But today our domain will be chemistry. What is chemistry and what do we study in chemistry? You will take your notebook and your pen, because most of the things that we are going to deal with today are to be written. हमें बहुत सारी चीज़ों को लिखना है. I hope आपके पास पेन और नोटबुक आपके साथ ही होगी. So हम देखेंगे, हम लिखेंगे पहला सेंटेंस, केमिस्ट्री है क्या चीज़, केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है. केमिस्ट्री, you can write that is the study of structure, composition and properties of matter. केमिस्ट्री क्या चीज़ है? It is the study of structure, composition and properties of matter. Structure and composition लेते हैं. Composition means simply एक मैटर जो है किन चीज़ों का बना हुआ है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, किन एटम्स का बना हुआ, किन मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है. दिस कॉन्स्टिट्यूट्स कंपोजिशन. जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टी, अगर हमें पूछा जाएगा टी की कंपोजिशन क्या है, वी कैन से टी लीव्स, मिल्क, वाटर, शुगर. दिस इज द कंपोजिशन ऑफ टी. सिमिलरली हर एक सबस्टेंस जो मैटर है हमारे इर्द गिर्द, इट इज ईदर मेड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स. अभी एटम्स कौन से हैं, मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, वी दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द कंपोजिशन ऑफ मैटर. एंड स्ट्रक्चर में क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं ये जो एटम्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एक मैटर के, हाउ आर दीज एडजस्टेड, ये कैसे एक विद रेस्पेक्ट ईच अदर, कैसे किस तरतीब में, इनकी किस डायरेक्शन में कौन से एटम्स, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं एक दूसरे के विद रेस्पेक्ट ईच अदर, इनकी क्या रिलेशन है. तो दिस कॉन्स्टिट्यूट स्ट्रक्चर एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. प्रॉपर्टीज में ऑफ मैटर में हम मोस्टली क्या पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शंस. Properties of matter में usually, yes, we also study physical properties of matter, but the actually that we lay chemistry में जिस चीज़ पे stress दिया जाता है, that is the chemical properties. या simply कहेंगे एक substance की chemical properties या chemical reactions, how it reacts with other substance. तो chemical properties में ये हो गया subject matter of chemistry. अब matter जो है, you know that matter is either made up of atoms or molecules. So we can say in nutshell, chemistry is the study of atoms and molecules. Atoms and molecules. Chemistry में या तो हम हर एक मैटर जो है या तो एटम का बना होगा या मॉलिक्यूल का. इसलिए chemistry is actually the study we define as the study of atoms and molecules and their interconversion, etc. Coming to our next point, importance of
chemistry. Chemistry is a very important branch. It plays a central role in science because it's connected to almost every other branch of science. चाहे physics हो, चाहे biology हो, चाहे और कोई branch of geography हो science का. So chemistry plays some role in every branch of science. So it is a central subject. तो इसकी importance में पहला point आप note down करेंगे, contribution to food. Contribution to food. How chemistry helped man to cope up with the rising needs of food in the world. You know that अगर आप 50-60 या 100 साल, if we go back 100 years, almost the population was half what actually is present today. अब इतने कम और से में इतनी सारी population बढ़ गई तो गुज़ा की जो नीड है वो भी बढ़ गई है. And for this increasing population, we need more food, and chemistry has come to our rescue. Chemistry has developed some fertilizers, pesticides, weedicides, etc. जिनसे क्या है हमारी जो पैदावार है फूड की, it has increased the food production. Food production जो है increase हुई है with the help of chemicals that are devised by chemistry. उन chemicals में खासकर क्या है, एक तो fertilizers है जिनसे पैदावार बढ़ जाती है, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स एक्स्ट्रा जिनसे हमारे जो पेस्ट्स वगैरह जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे हमारी फसल बच जाती है. नंबर सेकंड, अब एक तो पॉपुलेशन बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज्ड. यानी अभी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंसान का बढ़ गया है. ये बात आप ऐसे समझेंगे अगर हम 50 साल या 10 या 20-30 साल वी गो बैक इन आवर हिस्ट्री, तो लोग जो है कुछ भी खा, फॉर एग्जाम्पल मलबेरी हम खाते थे किसी भी स्टैंडर्ड का कहीं भी हो, लेकिन आजकल जो है एक आपके पास फॉर एग्जाम्पल गुज़ा जो है इट मस्ट बी वेरी हेल्दी, इट मस्ट बी हाइजीनिक. सो टू कंट्रीब्यूट दिस एस्पेक्ट कि हमारा गुज़ा जो है इट मस्ट बी hygienic and healthy, chemistry has come up with certain chemicals that we call as preservatives. You write down preservatives. Preservatives are chemicals that increase the shelf life of our foods without contamination. For example, अगर आप दूध सुबह से शाम तक रख लेते हैं तो वो खराब हो जाता है गर्मी के दिनों में, लेकिन वही दूध अगर पैकेट्स में जो हमें बाहर मिलता है उनकी जो shelf life है it's more than 1 day. Some foods have the 30 or 60 day shelf life. Some milk products. वो क्यों है? Because they have some preservatives added to them. Now contribution, second point जो है contribution to the better health and sanitation. हम लोग जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले कुछ डिजीज थी जो आजकल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, शितल उनको अपनी लैंग्वेज में कहते थे, या ऐसी कुछ डिजीजेस जिनका नाम आज बिल्कुल नहीं है. ये क्या है? बिकॉज केमिस्ट्री हैज हेल्प्ड मैन टू डेवलप सर्टेन वैक्सीन्स फॉर दोज डिजीजेस. इसी तरह से कुछ डिजीज chemistry has come up with some life-saving drugs. AZT is one of them. AZT is one of the drugs that is used to treat, to help the AIDS victims. So AZT actually stands for azidothymidan. azidothymidan, azidothymidan. Similarly, antibiotics have helped us to curb the infections. Antibiotic, the रोजमर्रा के infections, we can curb them with antibiotics. Anesthetics, anesthetic, जब किसी patient की surgery होती है, he is administered some chemicals so that he loses his consciousness. तो इस तरह से हमारी सर्जरी आसान हो जाती है. याद कीजिए वक्त जब एक इंसान की सर्जरी ऐसी होती थी when he was full conscious, और इसकी कोई टांग या हाथ या उंगली काट दी जाती थी. So it was always a cumbersome process. इसी तरह से synthetic vitamins हमारे पास आ रहे हैं, that is also the product of chemistry. The third point is the new materials. Chemistry has come up with certain new materials. For example, अगर हम पहला कंप्यूटर देखेंगे that was spread over to 1 or 2 canals of land,
आज का कंप्यूटर बिल्कुल एक छोटा सा, एक लैपटॉप सा या हमारे एक मोबाइल जैसा कंप्यूटर आ जाता है। इसकी वजह क्या है? बिकॉज केमिस्ट्री हैज हेल्प्ड अस to devise some materials which have desired properties, desired electrical properties and desired magnetic properties. Machines and tools have been miniaturized, इनका साइज कम होता गया है। न्यू मटेरियल्स, इस तरह से हमारे बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट देख लीजिए जिनसे हम हमारी बिल्डिंग्स बनती है, बहुत सारे नए नए मटेरियल जो पहले नहीं थे। These were contributed by the study of chemistry. You can write down fourth point, comforts of life. You can have many comforts in your room right now while you are actually watching this video. First of all, you can have the mobile phone in your hand. Most of the things have been contributed by the study of chemistry in your mobile phone. इसी तरह से हमारे पास अगर रोज़मर्रा की चीज़ें देखेंगे, सोप्स, डिटर्जेंट्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, सिंथेटिक फाइबर्स, पहले सिर्फ 3 नेचुरल फाइबर्स होते थे, सिल्क हुआ करता था, कॉटन हुआ करता था, लेकिन आजकल we have so much synthetic fiber available that caters to the need of the rising populations. तो कॉस्मेटिक्स है, इसी तरह से बहुत सारी और चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ कुकिंग गैस, टूथपेस्ट एटसेट्रा, सो मेनी एग्जाम्पल्स इन योर किचन, इन योर होम, इन योर रूम, एवरीवेयर। इसी तरह से जो हमारी एनर्जी नीड्स है, यानी पावर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी नीड आजकल जो पूरी हो जाती है न्यूक्लियर एनर्जी से, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। देन वी हैव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, नंबर 5th पॉइंट। केमिस्ट्री की नॉलेज से हमारे पास कुछ ऐसे फ्यूल्स आ गए हैं दैट हैव वेरी हाई क्वालिटी, जो रॉकेट्स में यूज होता है, जो एरोप्लेन्स में यूज हो जाते हैं, दैट हैव ईज्ड आवर कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल। And safety of nations, last point, safety of nations. Chemistry has helped the man to develop certain weapons which act as deterrents. अगर एक मुल्क के पास ऐसे हथियार नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल, तो खतरा रहता है कि नेक्स्ट कंट्री विल अटैक इट, सो some other countries will attack it. इसलिए जो chemistry has helped man to develop nations that act as deterrents, जो दूसरी countries को, powerful countries को रोकती है from any such misadventures. These are some, we can say, some of the important features, some of the important contributions of the chemistry towards the good living of man. Thank you very much. Tomorrow, inshallah, we take up the next topic. That will be about particulate nature of matter. Fi amanillah.